Jai Hind everyone. I am Ashish Dixit, Assistant Professor, Computer Science and Engineering Department, Ajay Kumar Garg Engineering College. So today we will discuss about the topic AVL Tree, and we can also call the height balance tree. This topic is considered under the data structure using C. So here we will discuss the AVL tree. AVL tree is invented by the G.M. Adelson, Walensky and E.M. Landis in 1962. The tree is named AVL in honor of its inventors because its name fully dependent on the researcher or inventors. Second thing, AVL tree can be defined as a height balance binary search tree in which each node is associated with balance factor, which is calculated by subtracting the height of its right subtree and from that its left subtree. Okay, first of all we will find out the height of the node and then height of the node, then after we will consider the balance factor. Balance factor, through the balance factor we will find out the how much rotate our AVL tree in which particular conditions. So here a tree is said to be balanced if balance factor of each node is in between -1 to 1. Otherwise the tree will be unbalanced and need to be balanced. Okay, so here a tree is said to be balanced if balance factor of each node is between -1 to 1. Okay, second thing, the formula of the balance factor is equals to height of left subtree and height minus height of right subtree. So here we will find out the height. So first of all, this is the AVL tree, and here if we take this point 65, then no left subtree and no right subtree, means its a balance factor is 0. Same here, balance factor 0. Okay, again check here, 25 did not have any left subtree or a right subtree, that's why the balance factor is 0. Okay, again check 50. So first of all, height of left subtree and height of the right subtree. So here so 50, if we take the examples related to 50, then 50, the left child of the 50 is a 1 and right child 75. Then first of all the check, then check the balance factor, left height 1 and right height 1, 2 means -2, then balance factor -1. Okay, second thing, -1, 1 means if we take the node 150, then
left subtree 1 and right subtree 1, means 1 minus 1 0, means balance factor 0. Again we check. The height of the left subtree 100 node, 1 2 3, means height of the left subtree 3 and height of the right subtree 1 2. Okay, 1 and 2. Then 3 minus 2 1. Okay, then this is the balance factor, means if you can say that balance factor is equals to height of left subtree minus height of right subtree. Okay, next, AVL tree also have some types of rotation. First, right rotation, and second, there are basically 4 types of rotation which are as follows. First, right rotation, when BST becomes unbalanced due to node is inserted into the right subtree of A, then we perform a right rotation. RR rotation means right rotation is an anti-clockwise rotation which is applied on the edge below a node having balance factor minus 1. Okay, node have a balance factor minus 1, then it will be rotate. So here this is the tree, and here I also mention balance factor 0, minus 1, minus 2. First of all, focus on this point. If the balance factor is minus 1, then tree will be rotate anti-clockwise. So here balance factor 0, minus 1 and minus 2. Check करें. Let's check. BF is equals to height of the left tree. Height of the left tree is 0 and height of the right tree 1 2, minus 2, then minus 2. Okay, so here we pick the node A and rotate anti-clockwise, means push and pull, then it will be in balanced form. मीन्स यहां से ए को पकड़िए और अपनी तरफ इसको एंटी क्लॉकवाइज पुल कर दीजिए. पुल करने के बाद आपका क्या होगा, जो ट्री होगा वो क्या होगा, बैलेंस होगा. 0 0 0. ओके, देन नेक्स्ट, again we will take the examples of the left rotation LL. Then left balance tree, when BST becomes unbalanced due to a node is inserted into the left subtree of C, then we perform LL rotation. LL rotation is a clockwise rotation which is applied on the edge below a node having a balance factor 2 plus 2. Okay, then what we can do? Okay, first of all, check the balance factor. This is the left unbalanced tree. Balance factor 0, 1 and 2. Then again pick the C and pull in a clockwise direction. Means C को पकड़िए और अपनी तरफ उसको पुल करिए. पुल करने के बाद मैंने यहां पे होल्ड किया और इसको जब इधर किया, रोटेट किया, देन
B also have the child, C also have the child B. After the pulling, B become a parents of C and A, and this is the balance factor. Got it? Next, left rotation, right rotation, then RL rotation and LR rotation. Third point, RL rotation. RL rotation is equals to LL rotation plus RR rotation. Like examples, first LL rotation you perform on a subtree and then RR rotation perform on a full tree. Okay, first of all, LL rotation will be performed on a subtree and then after RR rotation you perform on a full tree. By full tree we mean that a first node from a path of inserted node whose balance factor is other than -1, 0 or 1. Got it? Okay. Next thing, this is the tree. This is the tree. Then A is a root node, B balance factor 0, 1 balance factor, C balance factor 1 and A balance factor -1, because here the balance factor is 0, 1 and 2 and -2. Okay. Then again first LL rotation plus RR rotation. Okay, LL rotation plus RR rotation. So here we will pick a C and rotate right, then C will be make a parent of B will be make a parent of C. Then after we will pick A and rotate her anti-clockwise and we will get the form this. Means सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करें, LL रोटेशन प्लस RR रोटेशन है, देन जो हमारी LL रोटेशन है वो हमें सबसे पहले क्या करना है, सब ट्री पे लगाना है, देन आफ्टर हमें फुल सब ट्री पे RR रोटेशन लगाना है. ओके, तो यहां पर हमें क्या करें, कंसेप्ट यूज करना है. हमें कंसेप्ट ये यूज करना है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ पेरेंट ऑफ C, then in this form, then again we will rotate and after rotation we'll find out the this tree. Next LR rotation. In this tree rotation, RR rotation plus LL rotation. First RR rotation is performed on a subtree, then LL rotation is performed on a full tree. Okay, then again we will take the examples A, B, C, A, B. Okay, this is the balance factor. Again we will consider okay, then A, B and C. Then here A, pick the A and push on an anti-clockwise, then B become a parent of A, then again we will get in this form, again we will pick the C and rotate clockwise, then after we will this balance tree. Okay, so here one question, construct
an AVL tree having the following elements. मीन्स ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको एक AVL ट्री बनाना है. अब AVL ट्री कैसे बनाना है ये हम देखते हैं यहां पर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल HIJ, insert HIJ in a tree, then first H, then after HI is a greater of H, then it will be inserted in a right, then J, HIJ, J is a greater than of I, then it's also inserted in a right. Okay, then again check balance factor. Here balance factor is 0, either -1 and this is the -2. Okay, so here we will apply the RR rotation. Okay, then again the resultant balance tree, here pick H and push anti-clockwise, means हम इसको यहां से पकड़ेंगे और एंटी क्लॉकवाइज इसको पुश कर दे, पुल कर देंगे. पुल करने के बाद वी विल गेट द बैलेंस ट्री IHJ और सभी का बैलेंस फैक्टर हमारा यहां पर 0 होगा. गॉट इट? नेक्स्ट अगेन इंसर्ट B and A. B is smaller, B and A is smaller than H, that's why we will insert B and A in a left direction, in a left side. H, then B, then A. Again insert and again check balance factor. Here 0, here 1, here 2. Okay, then this is the 2. And again we pick H node and pull in a clockwise direction. Pull in a clockwise direction. Then after the rotation of the clockwise, we will get the resultant in this form. This is the balanced. Check again check 1 A H B I and J. Okay, this is the in the form of balance. Next, again insert I, again insert I. Okay, then insert E, again insert E, then E is the smallest element in comparison of A, H, that's why E is inserted in the left side of H. Again check the balance factor. Here this is a +2, -1, 1. Then again we will apply the RR rotation, then LR rotation, RR plus LL rotation. This is called LR rotation, means RR plus LL rotation. Okay. Then first we will perform the RR rotation. Then again here RR rotation. Then again we push the B. Okay, we push the B, and B always kept in mind, if we perform a RR rotation, तो होगा क्या, जो हमारा H का लेफ्ट चाइल्ड है, ये देखिए हम इसको इस तरह से पुल करेंगे, तो जो H का चाइल्ड है जब
H पेरेंट बनेगा B का, तो जो H का चाइल्ड होगा लेफ्ट, वो B का क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड बन जाएगा। वो B का क्या बनेगा, राइट चाइल्ड बनेगा RR रोटेशन में। और यही अगर हम LL करते तो क्या होता, जो हमारा अगर यहां पे H की जगह हमारा लेफ्ट राइट चाइल्ड होता, तो राइट चाइल्ड B का लेफ्ट चाइल्ड बन सकता था। अभी एक कंडीशन और आई, बट हियर वी विल अप्लाई द concept. We push the B node in an anti-clockwise, okay, then the left child of H will be make a right child of B, means E will be make a right child of B, okay. Again push, देखिए जो H है, H का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो अब B का राइट चाइल्ड बन गया, ओके। देन LL रोटेशन, देन आफ्टर RR रोटेशन वी विल परफॉर्म द LL रोटेशन, ओके। अगेन वी पुश I, pick I and pull in a clockwise direction. After the clockwise direction, H will be act as a parent of I. देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे और इस तरह से पुश करेंगे, तो हमारा जो H है वो क्या हो जाएगा, I का पेरेंट बन जाएगा और J एज इट इज रहेगा। यानी हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट इंसर्ट CFD, इंसर्ट CFD। देखिए C have the value, smallest value in comparison of E, and D is a greater than of D. C, F and F is a greater value of E. Then we will set as the binary search tree on the behalf of binary search tree. And again check the balance factor. Here 0, -1, 0, 1, -2, then -2. Then first of all we perform a LL rotation, then again LL rotation, we push, we pick the E, and pull in a clockwise direction, then C will be act as a parent of E, and the left child of and the right child of C will be make a लेफ्ट चाइल्ड ऑफ E. जो C का राइट चाइल्ड है वो क्या हो जाएगा, E का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा, ओके। मींस हियर वी विल परफॉर्म अ LL रोटेशन, देन आफ्टर वी परफॉर्म अ RR रोटेशन, देन अगेन वी पिक B and pull in an anti-clockwise direction, then C will make a parent of B, and this is the balanced tree. First of all check the balance factor, 0, 0, 0, -1, 0, 1, then 0, 1 and 0. And before this concept I already declared that the balance factor will be vary -1, 0 and +1, okay. Next insert G. After the inserting G is have the greater value of the B comparison of F, then G insert in a right side of F, okay. Then here again check -1, -1, 1 and 2. Then first of all perform RR rotation on node C. हम क्या RR rotation node C में हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। देन परफॉर्म करने के बाद में अब हमारे पास क्या होगा ये देखिए, देन C को हमने इस तरह से इसको लिया और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया,
रोटेट करने के बाद में हमारे पास जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, जो हमारा ई का, ये ध्यान रखिएगा, जो ई का हमारा ट्री है, यानी जो ई का हमारा चाइल्ड है वो सी का राइट चाइल्ड हो जाएगा। ओके, जो ई का चाइल्ड है वो हमारा का चाइल्ड बन जाएगा। देन हमने रोटेट किया और आफ्टर रोटेशन हमने क्या किया है, देखिए इसको सी को लिया और हमने पुल किया एंटी क्लॉकवाइज, और आफ्टर पुलिंग एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा ई का जो चाइल्ड था वो सी का हमारा राइट चाइल्ड बन जाएगा। पहले डी जो है ई का लेफ्ट चाइल्ड था, अब डी जो है सी का राइट चाइल्ड बन जाएगा। ओके, अब बैलेंस फैक्टर आप चेक करिए एज इट इज है। गॉट इट? नेक्स्ट, when then perform LL rotation on node H, then देखिए पहले हमारा ये था, देन अगेन RR रोटेशन में हम LL रोटेशन, यानी हमारे LL रोटेशन हम करेंगे। के बाद में हमारे पास देखिए क्या आ गया, ये हमारे पास बैलेंस फैक्टर आ गया। देन हमने क्या किया था वहां पे, अब हमें क्या यहां पे क्या करना, H पे करना था हमें रोटेशन। H पे अगर हमने यहां पर कर दिया तो H को जो हमने इंसर्ट किया, देखिए ऐसे करके इस तरह से, तो यहां पे जब इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, नोड बन जाएगा। देखिए, और जो हमारा E का, देखिए जो E का हमारा राइट था, राइट ट्री था, वो क्या बन जाएगा, H का लेफ्ट बन जाएगा। देखिए, then after insert k, then after insert k after j insert कर सकते हैं राइट में। फिर से बैलेंस फैक्टर चेक किया, बैलेंस फैक्टर चेक करने के बाद देखिए यहां पे क्या आ रहा है, -2। ओके, अब -2 आ रहा है तो हम क्या कर दें, रोटेट कर दें। देखिए रोटेट कर दिया, यहां देखिए इसको इस तरह से पकड़ा और रोटेट किया। रोटेट करने के बाद में हमारे पास क्या आ गया, द रिजल्टेंट ऑफ द बैलेंस ट्री। देखिए आई जे के था, हमने इसको जब रोटेट किया तो हमारा क्या हो गया, आई यहां आ गया, जे यहां आ गया, ओके यहां। अब सभी का बैलेंस फैक्टर एक बार चेक कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ द बैलेंस फैक्टर 0 0 ओके, 0 -1 0 0 1 0 1 0 means after the checking balance factor will be lie from -1 0 and +1, means balance factor will be lie -1 to +1. Okay, thank you very much.